டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ் வெல்னஸ் அனைத்து நோய்களுக்குமான ஆயுர்வேத மருத்துவம் தமிழகம் எங்கும். For appointments 99942441 and 9994211666. How do you see this development? Because India has cut down just 9 locations, and those locations are selected based on the intelligence input, and these are the targets of basically the leadership of Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba. That's right. That's right. I think India has shown a great restraint here. They could have, indiscriminately and wildly attacked Pakistan, which they did not do. These 9 locations appears to be chosen because this is where the terrorists had used this infrastructure. So this is an attack on the infrastructure used by the terrorists. This should not result into a retaliation from Pakistan, because this was a very measured response, very thoughtful response, and it's a response against the terrorists and their infrastructure. Indian leadership has briefed the US leadership and some other major countries about this development. Do you expect any major retaliation or escalation in the region? There should not be any, because India's response is so measured and so targeted. But at this time, I do recognize India has a right to protect its people, protect its territory, and fight against terrorism. United States has stood by Israel when Israel was attacked by terrorists, and similarly, United States must stand by India in this hour of need and support its fight against terrorism. President Trump had also responded to this terrorist attack, and he was one of the first leaders who responded to this attack. What US will advise at this moment now? Well, look, US must investigate the cause, must ask that an independent investigation must happen about the terrorist attack. If early indications are that Lashkar-e-Taiba and the state of Pakistan has been involved in this, if that is true, then the United States must use its relationship with Pakistan to demand that Pakistan stop supporting, harboring terrorism and terrorists. And if Pakistan does not stop, U.S. should not hesitate in using its economic relations, whether it's economic sanctions, whether it is slowdown or stoppage of military sales to Pakistan. But U.S. must use the means that it has in its power to pressure Pakistan from not supporting terrorism and these terrorist acts. And what would you like to say about Prime Minister Modi's leadership, and especially the Indian Armed Forces? Well, the Indian Armed Forces and Mr. Modi has reacted. This is a just response. This is a proper response. This is a limited response. And it's a very calculated and measured response. So I applaud Mr. Modi for his restraint, and at the same time, I applaud his resolve to protect his people, his nation's territory, and his resolve to fight terrorism. I will request you, sir, please respond in Hindi as well. तो किस तरह से देखते हैं भारत ने रिस्पॉन्ड किया है? 9 टारगेट को चुना है जिसमें आतंकी संगठन से जुड़े हैं ये जो टारगेट्स हैं. हाँ जी, तो
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बड़ा रिस्ट्रेन दिखाया है। उन्होंने सिर्फ वही टारगेट्स दी है जो आतंकी लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है। ये रिस्पांस सफिशिएंट है, ये रिस्पांस करेक्ट है, और ये रिस्पांस को अमेरिका ना सपोर्ट करना जरूरी है। अमेरिका की फ्रेंडशिप इंडिया के साथ होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए, और इंडिया जब आतंकवाद से मुकाबला कर रहा है तो उनको अमेरिका सरकार ने सपोर्ट करना अत्यंत जरूरी है ये टाइम। भारतीय प्रधानमंत्री खुद इस पूरे ऑपरेशन जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और जो हमारे एनएसए है डोवाल, उन्होंने दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं उनको ब्रीफ भी किया है रात हमले के बाद ही। तो भारत के इस मौके पे एक तरफ हमला, लेकिन दुनिया की जो लीडरशिप है उनको भी लूप में रख रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो देखिए, सब वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये समय पर भारत के साथ रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी को सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि जो हुआ पहलगाम में, जो हुआ 26 लोगों की मौत हुई, मर्डर्स हुए टेररिस्ट ने किए, ये तो हिंदू मर्डर्स थे, हिंदू के मर्डर्स थे। और ये प्रकार का आतंकवाद टॉलरेट नहीं करना चाहिए और इसका मुकाबला करना चाहिए, इसको ये स्टॉप करनी चाहिए। और अमेरिका की ये नैतिक जवाबदारी है कि वो भारत को सपोर्ट करे। और इसके बारे में जब पाकिस्तान का जो इसमें पार्टिसिपेशन है, उसके बारे में पाकिस्तान को डिमांड करे कि वो आतंकवाद को सपोर्ट ना करे। एक आखिरी सवाल सर, I would like to please, sir, if you can please respond in Marathi as well, and if you can say in Marathi. या आता मी अमेरिकेतला मराठी खासदार आहे, डिट्रॉइट एरिया मधला। आणि भारतावरती जो अलीकडे हल्ला झाला पहलगाम मध्ये, त्यांनी अगदी मोजून 26 हिंदू मुलांचे हत्या केली। ती अतिशय घाणेरडी गोष्ट होती, घृणा म्हणजे अतिशय टेरिबल थिंग होती। आणि या टेररिस्टना धडा शिकवायलाच पाहिजे, त्यांना पकडलं पाहिजे। त्यांची जी काही इन्फ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तानमध्ये आहे, तर भारत सरकारनं खूप संयम पाळून असा अटॅक केलाय त्यांच्यावरती, की त्यांची जी काही इन्फ्रास्ट्रक्चर होती पाकिस्तानमध्ये तेवढीच नष्ट केली आहे। तेव्हा अमेरिकेला भारताचा सपोर्ट दिला पाहिजे, भारताबरोबर राहिलं पाहिजे आणि पाकिस्तानला जबाब विचारला पाहिजे। त्यांनी जो या आतंकवाद, या टेररिस्ट लोकांना जी त्यांनी मदत केली आहे, त्यासाठी त्यांना जबाबदार धरलं पाहिजे। आणि अमेरिकेनं त्यांचं जी काही नातं आहे पाकिस्तान बरोबर, ते वापरून त्यांच्यावरती इकॉनॉमिक सँक्शन्स आणावीत, त्यांना मिलिटरी इक्विपमेंट, मिलिटरीची विमानं न विकणे, असे काही उपाय करून त्यांनी पाकिस्तानला याबद्दल शिक्षा द्यायला हवी आहे। पण ती अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे की या अवघड प्रसंगी अमेरिकेनं नरेंद्र मोदींना सपोर्ट करावा, भारताला सपोर्ट करावा। कारण नरेंद्र मोदींना भारतीयांचे रक्षण करणं अत्यंत महत्वाचं आहे। भारतीय लोकांच्यावर हल्ले जे झाले त्याच्याशी प्रतिकार करणं अत्यंत महत्वाचं आहे। आणि नरेंद्र मोदी, प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजींनी जे काही केलेलं आहे, हा हल्ला आणि हा अटॅक योग्य आहे आणि हा जरुरीचा होता टेररिस्टना एक धडा शिकवण्यासाठी। Thank you so much, sir. Thank you so much for बघा your time.